The topic today is solid waste management and plastic wastes. So, when one talks about solid waste, the first thing which comes to our mind is all the kitchen garbage, plastic bottles, all the packaging wrappers, different fecal materials. From the cows, they dump their dungs on the road. All these things they come into our mind, and it is right. Among the solid waste, also, it is a part of this is the biomedical wastes, and also from the waste from the laboratories where you use pipette tips and all. They are rejected in tons. They also fall under category of plastic waste. So let us start without wasting time. Let us start our talk today about first solid waste management. So solid waste management, recycle. The most important mantra of solid waste management is recycle, reuse, and reduce. So first thing what you need to do is to reduce the usage and then reuse. For example, plastic bottles. For example, this is being used for a different purpose. This was first for Sprite, and now it is being used for growing plants. So I'm trying to create some oxygen and purification in my room, on my table, on my desktop. So this is a good way. You can clear by growing plants in old plastic bottles, like money plants is a very good thing. Syngonium, you can grow these, and you can have a good benefit of purifying your home. They require little maintenance. Just put some water, maybe 1 or 2 drops of liquid fertilizer, and then put them inside. And once a month, change the water. That's all. They will thrive and purify your house. So this is one way these plastic bottles can be used. I find this to be uh, in a way, it's a good way of reusing plastic bottles. So let us go to the next slide. So basically, we will introduce to waste and types of waste. Then we talk about solid waste, types of solid waste, effects of solid waste. Effects of solid waste, waste management concepts, concept of 3R, that is reduce, recycle, and uh, reduce, recycle, and uh, reuse. And then solid waste management, storage, collection, waste handling and disposal, method of disposal. We'll talk about some of the technology, then what is a zero waste system, and some recommendations. So waste is defined, waste also known as rubbish, trash, refuse, known as rubbish, trash, refuse. Garbage, junk is any kind of unwanted or useless materials. That is waste. Any materials unused and rejected as worthless or unwanted, and a useless or profileless activity using or expanding or consuming thoughtlessly or carefully. This is waste. It's rubbish. You don't want it anymore. That is how you define waste. So waste can be solid waste, liquid waste, gas waste, animal products, biodegradable waste, chemical waste, commercial waste, business waste, biomedical waste, bulky wastes. There are lots of types of wastes. So we are concerned with solid waste. This is non-liquid, non-soluble material. It ranges from municipal garbage to industrial waste that contain
complex and sometimes hazardous substances. They also include garbage, rubbish, demolition products, sewage treatment residues, dead animals, manure, and other discarded materials. The per is 0.25 to 2.5 kg per day per capita. A person throws out around 0.25 to 2.5 kg waste. So per person, per capita, that a per earning person, you can say, every day you throw out this much amount. So sources can be agriculture. In agriculture, there is waste. Fisheries, you'll have waste. Household items, waste. Old mobiles, TV sets, they're all thrown away on the road. Then from commerce and industry also, you can have these types of waste coming out. So broadly, there are three types of waste. One is household waste or municipality waste. Then industrial waste or hazardous waste. Then you have biomedical waste or hospital waste as infectious waste. So this is a very, currently this is becoming a very terrible thing. So municipal solid waste, they consist of household waste, construction and demolition debris, sanitation residues, waste from streets. So with rising urbanization and change in lifestyle and food habits, the amount of municipal solid waste has been increasing rapidly and its composition changing. Nowadays, everything you buy, it is coming in plastic packages, wrappers. After eating your chocolate, you throw the wrapper. What happens to the wrapper then? It goes and accumulates. It has to be disposed properly. So, if you characterize municipal solid waste, 5.2% is good. This type of waste, this is not that harmful. 5.9% is glass. 10.4% food waste. This is a dangerous plus. 9.4 plastic is plastics. Then 7.7 metals. Paper board, 38.1%. So paper industry is actually contributing to the major amount. And 13.4% yard waste. हम लोग गार्बेज जो फेंक देते हैं बाहर में. Then you have the hazardous waste. These are the industrial and hospital waste. It is considered hazardous as they may contain toxic substances. होता है. You people, it is really very frustrating how Asansol's waste system is being managed. 2-3 years back, there was a flood. Lots of cars and houses and properties were damaged. Have you heard about this? सुने हो ये जो फ्लड हुआ था आसनसोल 2-3 साल पहले कोविड के बीच में? यस नो सुने हो उसके बारे में? हेलो. यस सर. हाँ, तो 2021 में हुआ था. एग्जैक्टली वो लॉकडाउन के बीच में हुआ था. एकदम बहुत ही मतलब there was a lot of damage. बहुत ही डैमेज हुआ था प्रॉपर्टीज का. हाँ, मेरा भी एक गाड़ी बर्बाद हो गया, पूरा डूब गया था. And the result, this is because in Asansol, there are lots of construction sites being made. The place where I live in Murgasol, what happens near Aradanga, there was a lots of natural waterlands. There were marshy waterlands, open space. There was, and those are places where the rainwater, when it falls, it percolates and it increases the groundwater level after filtration, and that is the water which you take out from your borewell or tube well. Now, because so many constructions are taking place, that place is becoming concrete, and these places of water recharge point, I would say, like you recharge your mobile from a power socket. Here, these are the water recharge soil for the water recharge parts. They are being blocked. So the number of recharge point is blocked. So result is
that you have water problems in Asansol. The groundwater level is being used every year and it's not being recharged, and that is going down. So pani ka problem hamesha aa raha hai. Now you have to go very deep to get water in Asansol. And Asansol had a wonderful system. The river which actually collects the rainwater is the Goroi Nodi, Gori River. From on the side of the bypass, you can find, and that has become into a toxic waste place. If you go and see there, Asansol has got a beautiful thing. On one side you have Damodar, and on the other side you have our GT Roads area. And on SB Gorai Road, it is an elevated region. So all the rainwater which comes, which falls on Asansol, it doesn't accumulate on SB Gorai Road. From SB Gorai Road, from one side it goes to the Damodar River, and on the other side it goes through 4 or 5 canals, small rivers, which go and meet the Gori River. And these canals in Murgasol, what Asansol municipality had done earlier, they converted this particular these little channels, these little small rivulets. They took the water to the Gori River, and in between they gave lots of plants and animals, and it was very clean. So they converted into a drain, a disposal of municipal wastes. So you have 4 big nalas. Well, you can see one in Murgasol. Murgasol ka nala dekhe ho? Drain? Anybody have seen? Laziz के सामने इतना गंदा कर दिया. वो एक्चुअली एक साफ छोटा सा नदी के तरह जा रहा था, ठीक है, उसको पूरा ड्रेन में कन्वर्ट कर दिया. A big problem, and result is वहां का water level भी block हो गया है. It is been blocked. मतलब all these junk materials silting हो गया, और the ground level started to increase. और एक है तुम्हारा हाई ड्रेन एरिया बोलते हैं बस्तीन बाजार में, हाँ, तो उषाग्राम में एक है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ नालाज ओवर देयर. This is a very shitty proposal, I would call. And construction, जैसे कि खाली ये जो वाटर रिजर्व रिचार्ज पॉइंट है इसको बंद कर दिया. We are wasting, we are blaming industry, but this is actually another thing. Your unplanned growth of houses. So all these new apartments which are being, especially if you look at Anand Vihar housing complex, that is totally a misplanned, mismatched, and a terrible consequence to the ecology of Asansol. Those are responsible for this, because the water is not able to go down into the soil. So what it does, it will flood. So this flood is going to come every year. Even the Gori Gori River, that is also going to have this flood. Because all these solid municipal waste, they're junking over there, and nobody's taking any steps. In front of our eyes, and we are responsible for this flood. Because, and not only that, we are losing this water. This is a resource. ये जो पानी हम लोग मतलब हम लोग को चाहिए, समर में वाटर क्राइसिस हो रहा है आसनसोल में. How do you solve this water crisis? First of all, an average household per day, at least 1,000 liters of water they utilize, and this is too much, far too much. Maximum it should be 200 liters of water maximum a family should be using. They are using over 1,000. नल खुला हुआ है, तुम मंदिर के पास में कॉर्पोरेशन का नाला देखो, वो नल का कोई है, जब पानी आता है तो पानी गिरता ही रहता है. कहाँ जाता है? वो ड्रेन में गोरी नदी से फ्लड करके चला जाता है. So you lose that water. So people must be very careful about it. I'm telling everybody, I cannot stop water usage in my house. People are not aware. They don't think about the consequence of wasting water. There are lots of things. When problems come, I'm preaching, but even in my house, I'm unable to practice conservation of water.
I see servants, they're keeping the tap open, water is flowing and flowing, and she's working and working, and water is flowing out. And when there is no water, nothing. Then you use the thing. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. So you don't have water to even where it's all bathroom becomes dirty, everything becomes dirty. So this is one thing. But let us go back to hazardous waste. So these hazardous waste could be highly toxic to humans, animals, and plants. They are corrosive. They are highly inflammable or explosive. In the industrial sector, major generators of hazardous wastes are the metal, chemical, paper, pesticides, dye, and rubber good industries. Direct exposure to chemicals in hazardous waste such as mercury and cyanide can be fatal. Now we come to hospital waste or biomedical waste. Biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals or in research activities. So basically it is what you get from the hospitals. So during COVID, lots of vaccinations were given for COVID. What happened to the syringe and the bottle of the vaccine? They were thrown, dumped. That's a waste. They're like sharp waste, pathological waste. Then the cotton swabs, these infected cotton swabs, they're all also thrown away. Radioactive wastes. In biochemical labs, I'd worked with radioactive. So these radioactive wastes are very dangerous. In India, they have no regards to radioactive waste. ऐसे कोई protection नहीं है. टिक 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 करके हाथ में ऐसे करके मुझे दिखा रहा है probe. And radioactive water and normal water, they look the same, they taste the same. पता ही नहीं चलता कहाँ पे ये पानी है या radioactive water है. You don't know, but अंदर ही अंदर तुमको it is destroying your body. So effects of solid waste, it's a health hazard. If solid wastes are not collected and allowed to accumulate, they may create unsanitary conditions. Epidemic outbreaks, cholera, diarrhea. यहाँ पे तो डायरिया हमेशा होता रहता है. Dysentery, plague, jaundice, gastrointestinal disease. यहाँ पे तो हम लोग तो पेट खराब को कोई बीमारी नहीं मानते हैं. पेट खराब की यार कोनो रोग होलो ना की होता ही रहता है. जॉन्डिस, आज इसको जॉन्डिस हो रहा है, ये आज इसको ये हो रहा है, वो होता ही रहता है. एंड the waste worker जो काम, those who are working with it, those who are जो untrained जमादार जो काम कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसको वो वेस्ट से उन लोग को नुकसान पहुंच सकता है. If they are not treated properly, decomposition and putrefaction may take place. अगर कोई मरा कुत्ता है वहां पे, कुछ दिन नहीं निकालोगे तो एकदम बदबू से मर जाओगे तुम. सड़ता है सब्जी तो आसनसोल मेन बाजार में जाओ ना, इतना बदबू क्यों आता है वहां बाजार में, सब्जी सड़ता है वहां पे. So the 3 R's are reduce, reuse, recycle. जितना बार हो सके प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल करो, जितना बार हो सके ठोंगा को यूज करो, बार बार यूज करो. हाँ, यू विल रिड्यूस द डिमांड. कहीं पे भी जाओ, दुकान में जाए, ऐसा दादा एक प्लास्टिक पैकेट दिन, प्लास्टिक के दिन, क्यों भाई, अपना थैली लेके चले जाओ, लेके आओ. करेंगे नहीं कोई. मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं करता हूँ. चिकन के दुकान में जाता हूँ, अपना थैली लेके जाऊंगा तो काम खत्म. वही सेम पुराना थैली में बोलूंगा इसमें तुम चिकन भर के दो, नहीं, वहां से वो डबल पैकेट चिकन, क्योंकि हाथ में लग जाएगा ना वो सब, डबल पैकेट करके मैं वापस आता हूँ. फिश के लिए भी द सेम थिंग हैपेंस. हाँ, प्लास्टिक पैकेट में बोला नहीं, वो हेड का पीस और जो तेल है उसको अलग पैकेट में डाल देना है, नॉर्मल पीस के साथ मत रखना है. और एक पैकेट यूज कर रहा हूं मैं. सो इट हैपेंस, आई डू इट, द सेम प्रॉब्लम्स. हालांकि वेजिटेबल वाले तो थैली में ही देते हैं. लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव्स, बट नो इनिशिएटिव्स उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. हालांकि इंडिया में रिसाइकलिंग इज अ ह्यूज बिजनेस. ये कबाड़ी वाले हैं ना, ये बहुत एनवायरनमेंट को बचा देता है. यू हैव टू ट्रीट दीज पीपल विथ रेस्पेक्ट. अपने दो रोटी के लिए दे आर वर्किंग थ्रू आउट द डे. हाँ, लेकिन यू हैव टू रियली रेस्पेक्ट दिस पीपल. दे आर डूइंग अ ह्यूज जॉब
तुमको तुम्हारा सेहत ठीक करके रख रहे हैं। ट्रीट पीपल, जो जमादार लोग हैं, ट्रीट देम विथ रेस्पेक्ट। उन लोग को गाली मत दो, अरे वो जमादार है, ये गाली नहीं है। दे आर इम्प्रूविंग योर सिटी। क्रोज, आजकल पॉपुलेशन ऑफ क्रो हैज फॉलन, की कौवा दिखता ही नहीं है। कौवा लेकिन साफ कर देता है सिटीज को। कहाँ पे कौवा है? लेकिन दे आर ऑल डाइंग आउट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। यू डोंट सी क्रोज एंड स्पैरोज नाउअडेज। क्या दिखेगा? कबूतर दिखेगा, वो सबसे ज्यादा गंदा करके जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रक्टिव। इतना कबूतर बढ़ गया है, कौवा दिखेगा नहीं तुमको। तो डिस्पोजेबल गुड्स आजकल कहीं पे है, डिस्पोजेबल पेपर प्लेट, पेपर बोल, ऐसे इसमें से ही काम चल रहा है। ये कप, टावर, पेपर नैपकिन। तो ये सब पेपर, इफ यू रिकवर दिस पेपर, यू कैन सेव एटलीस्ट 17 ट्री, 1 टन पेपर जो फेंक देते हो ठूंगा बूंगा। इसको अगर रिकवर करके जो तुम फाड़ देते हो पन्ना कॉपी से, 17 पेड़ को बचा सकता है। So reuse. Instead of buying new containers from the market, use the ones which are there in the house. Don't throw away the soft drink can bottle cover. Use them with homemade paper or paint them and use them as pencils, stands or small vases. Jaise, this plant was given to me by Shongita madam, Shongita Lai, Dr. Shongita Lai. So this is in the bottle. I'm using a plastic bottle where instead of throwing this bottle away, I'm putting put a money plant over here, and this is purifying my table. It is catching all the dust in my room. And it looks good aesthetically. अच्छा लगता है टेबल देखने में. You have a good feeling. I'm not going to throw this. अगर और एक बॉटल आएगा, पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना अच्छा नहीं है, और एक बॉटल आएगा तो उसमें और एक प्लांट लगा दूंगा मैं. You can keep them in the toilet. You can keep them anywhere in the house. जहां पे भी फ्लैट सरफेस है, एक छोटा सा प्लास्टिक बॉटल में डाल देना, बस खत्म. And recycle. Use shopping bags made up of clothes, jute, which can be used over and over again. Stop, think, recycle. What we cannot recycle, biscuit and chips packet, recycle नहीं होता है. Wrappers of bread, noodles, wheat, atta, flour bags, नहीं होता है. Thermocol and aluminium lined dishware, packaging of diaper and sanitary napkins. सिगरेट, पान, गुटखा. अरे गुटखा, बाप रे बाप, सिगरेट वाले से उतना डर ये नहीं है. मेरा गुटखा वाले ये जस्ट चूइंग लाइक काउज. बात नहीं कर सकते, फिर करके थूकेगा, बेकार है एकदम. मतलब गुटखा वाला देखने से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है. और हम लोग के बड़े बड़े सब फिल्म स्टार, शाहरुख खान, हाँ, अक्षय कुमार, और एक कौन है वो गुटखा का ऐड कर रहा है, ऋतिक रोशन. हाँ वही, वो सब. और ये सब देख रहा हूँ तो ये एक तरह से हेल्थ एंड फिटनेस दिखा रहे हैं. और उस दिन टाइगर श्रॉफ को दिख रहा है, वो भी एक गुटखा का ऐड कर रहा है. माय गॉड, दीज पीपल. एक तरफ जिम में ये सब बॉडी और मसल दिखा रहा है, फिटनेस को, हाँ, और उसके बाद गुटखा, उसका सिग्नेचर. टाइगर श्रॉफ को देखा हूँ, ऋतिक रोशन को देखा हूँ, अक्षय कुमार, वो तो देख के तो दिमाग खराब हो जाता है. एक तरह से ही टॉकिंग अबाउट हेल्थ, फिटनेस, जिम, ये सब बात करता है. दूसरा तरह पान बहार, पान पसंद, क्या सब नाम है, विमल पान मसाला, टॉप, ये लोग, एक अजय देवगन, ये सब चीज ये लोग कर रहे हैं. हाँ, तो ये सब चीज, मतलब ये गुटखा चीज अवॉइड करो भाई. एकदम बर्बाद कर देता है तुम्हारा जीवन और एनवायरनमेंट को भी. लैमिनेटेड गिफ्ट रैपिंग पेपर, टेक अवे फूड पार्सल्स. तो ये 3 R है, ये पढ़ लेना, मैं ये सब भेज दूंगा. तो फॉर द सेक ऑफ टाइम, हाँ, वी विल नाउ गो टू अबाउट प्लास्टिक्स. ये मैं भेज दूंगा. वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिक्स. इसको बेसिकली बहुत सारे चीज है तुम्हारे अवेयरनेस के लिए, बट दीज आर द मेन जिस्ट ऑफ what are the different types of waste and how you can manage them. अच्छा,
आई हैव गिवन यू वन बुक, तुम देखो बाद में, पहले देखना है। मैं एक छोटा सा पीडीएफ दिया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग से का वो पैम्पलेट है। सो प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स तो यू नो बॉटल, बट सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक्स एक आइडेंटिफिकेशन कोडिंग सिस्टम हैज बीन मेड इन 1988 which urges recyclers around the country. 7 तरीके का प्लास्टिक्स है। There are 7 types of plastic. One is your PET bottle. ये एक PET bottle है, Coca-Cola PET. It is nothing but polyethylene terephthalate PET bottle. You will see bottle के नीचे तुम देखोगे this type of sign. ये जो एकदम नीचे में, bottle के नीचे में you will see 01. That is a PET bottle. So 01, whenever you see, this is a one type of plastic. Then 2 types of plastic. This is not very well. तुम्हारा बिस्लरी के बॉटल में you will find all these things. This is not very good. Normally this is बार बार इसमें पानी पीना ठीक नहीं है. Then you have high density polyethylene. अब थोड़ा सा बेटर है. Then you have PVC जहाँ पे पाइप बनता है. It is better. It is more safer. PVC pipes, tanks, Syntex का tanks बनते हैं. This normally doesn't, this plastic doesn't cause problems. मतलब problems health wise. तुम्हारा अगर टैंक में पानी प्लास्टिक के उसमें है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा ये बॉटल में पानी बहुत दिन रखोगे तो प्लास्टिक का स्मेल आ जाता है. दैट मीन्स वो प्लास्टिक का कुछ रिएक्शन हो रहा है पानी के साथ, एंड दैट इज गोइंग इन योर बॉडी. इट इज नॉट गुड. Then you have the polyvinyl chloride, you देखा, low density LDPE polyethylene. Then polypropylene PP, polystyrene होता है. हाँ, फिर others है polyacrylic, butadiene, ये different types of nylon. ये relatively better है. These तुम देखो, ये पेट बॉटल है, ये HDPE है, इसमें से हैंड वॉश के बॉटल से ये बनता है. PVC पाइप्स बनता है, LDPE से ये सब चीज बनता है. हाँ, और PP से, पॉलीप्रोपिलीन से ये सब चीज बनता है. ये सब चीज PS से बनता है, पॉलीस्टाइरीन से. और ये सब पानी 7 अदर थिंग्स, ये सब चीज बनता है. सो यू पीपल आर क्लियर कौन सा प्लास्टिक से क्या बनता है? यस नो? यस सर. अच्छा, ठीक है. दिस इज बेसिकली प्लास्टिक. तो अब लेट अस सी प्लास्टिक का क्या क्या मतलब और क्या क्या हो सकता है. इट इज अ ग्लोबल कंसर्न. It is estimated that approximately 70% of plastic packaging are converted into plastic waste in a short span. 9.4 million tons per annum plastic waste is generated in India. India में 60% is recycled, mostly by the informal sector. मतलब तुम्हारे कबाड़ी वाला जो बच्चा, रैग पिकर्स, जो छोटा छोटा बच्चा ये लोग करते हैं. They work with these dirty hazardous chemicals and they're cleaning us and the cost of their health. Plastics are not bad, but they have very bad. We cannot destroy plastics. We cannot burn plastics because the gas produced is very harmful. How do we destroy plastic? लेकिन वो जमता ही जाएगा. तो if you are unable to remove this, अगर कोई नहीं मरेगा तो कुछ दिन बाद तो पैर रखने का जगह नहीं रहेगा इसी दुनिया में. सबसे ज्यादा यूएसए 65, यूरोप, चाइना, ब्राजील, इंडिया कम है बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि वो 60% प्लास्टिक को रीयूज कर देते हैं. तुम जो पानी पी के बॉटल ट्रेन से फेंक देते हो, वो एक बच्चा उसको लेके जाता है, वो बॉटल को लेके उसमें ही पानी भर के बेच देता है. सो खैर ये 11% में जो प्लास्टिक वाटर बॉटल, नाउ रेस्टोरेंट वाले ये लोग तो और भी हद कर दिए. यहाँ पे अपने पैंटालून में, इन पैंटालून जस्ट मेरे घर के पास ही है, वहां पे एक रेस्टोरेंट बना था, THEQUE. पहले क्या था, जब मैं खाने अच्छा लगता था कॉन्टिनेंट फूड, जब मैं खाने जाता था वहां पे. हाँ, तो
वो लोग पूछते हैं मिनरल वाटर या रेगुलर वाटर। फिर वो लोग बोला कि हम लोग रेगुलर वाटर एक्वागार्ड का वाटर बंद कर दिया, वी आर ओनली सेलिंग मिनरल वाटर। 20 रुपया लेके वो प्लास्टिक बॉटल दे रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। मैं बोला कि मैं तुरंत मैं ये बॉटल के लिए मैं पूरा तुम आप लोग के दुकान से खाना बंद कर दूंगा। वो लोग तो और एक बॉटल दे दिया 20 रुपया का बॉटल। लेकिन द थिंग इज दे डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, दे आर फोर्सिंग पीपल टू बाई वाटर इन दिस प्लास्टिक बॉटल्स। तुम कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, पहले ही प्लास्टिक का बोतल में पानी दे देगा तुमको। क्यों भाई, अपने एक्वागार्ड का साफ सुथरा बोतल से क्यों नहीं दोगे? कांच का बोतल ठीक से धो। हाँ, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। तो दिस इज वेरी बैड। रेस्टोरेंट में जाओगे तो मिनरल वाटर बॉटल दे देगा, ये वो बॉटल देना, और वो प्लास्टिक का बॉटल क्या होगा, वो दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड। अच्छा, वर्जिन प्लास्टिक होता है फर्स्ट टाइम जो प्लास्टिक यूज किया जाता है। It can be done 2-3 times because after each recycling, the plastic material deteriorates due to thermal pressure and lifespan is reduced. Here, recycling is not a permanent solution for plastic waste disposal. अब देखो ना हार्मफुल इफेक्ट्स, ओशन में कितना ये गिरा है, ये देखो मर रहा है। एक वेल दिख रहा है, दिस वेल इज बीन किल्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, पेट में से निकल रहा है। ये इतना प्लास्टिक निकला था वेल के अंदर से। कंज्यूम सो मच प्लास्टिक। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, यहाँ पे भरा हुआ है प्लास्टिक। यूएसए और ये पैसिफिक, यहाँ पे एक प्लास्टिक का आइलैंड बन गया है एकदम, सब जम गया यहाँ पे। 60% is waste. Total plastic waste generated every day is 15,342 tons. प्लास्टिक कंजम्पशन देखो कितना बढ़ गया है 2017 में, सो मच। 2007 में इतना था, इतना बढ़ गया है। टॉप स्टेट्स क्या है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। You have to think about sustainable development. So this is the last part. So what is this? Reduce, reuse, recycle, recovery and landfill. A safe disposal of wastes to landfill. So this is the last thing of plastic management I am going to talk about. Do you people have got any questions? Please feel free to ask me. हाँ ना, क्वेश्चन है? No, sir. Okay, fine. Then Tata, I will send you the recording and these slides. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome.